Prior being appointed as Naval Officer in Charge Odisha and Station Commander Chilka, he was appointed as Commodore Plans at Headquarters Eastern Naval Command. He took over command as the 23rd Commanding Officer of INS Chilka on 15th August 2000. Flag Officer Commanding in Chief, Southern Naval Command. Vice Admiral Sameer Saxena was commissioned into the Indian Navy on 1st July, Port, USA. The flag officer has had several key operational, staff and training appointments. As a non-specialist officer, he served on board Indian naval ship Ajay, Sukanya and Akshay. As a specialist, he served on the direction team on board the aircraft carrier INS Virat and subsequently as the navigating officer of the Indian naval ship Godavari. As in duty bound, honestly and faithfully, serve in the naval service, and go wherever ordered, by sea, land, the President, and the commands of. श्रद्धांजलि अर्पण के दौरान नौसेना के समारोह ब्यूगलर पहले लास्ट पोस्ट की धुन बजाएंगे और सम्मानित गतिविधियों के बाद रेवली की धुन। तू विश्व जगत का गौरव होगा, तू विश्व जगत का गौरव होगा। Is the rite of passage, marking the end of a rigorous training and the beginning of a lifelong journey to protect and serve the nation. प्लेटून संख्या 2 जिसको कमान कर रहे हैं श्रेष्ठ अरुण चौहान अग्निवीर एसएसआर। One flag, one land, one nation evermore. Now we have Sagar Pandey, Agniveer SSR, leading platoon number 3. प्लेटून संख्या 4 जिसका नेतृत्व कर रही है चांदी दीक्षित अग्निवीर एसएसआर। Adding grace to this beautiful evening, Sajida Ahmed Mulla, Agniveer SSR. बड़े ही गौरव के साथ मंच अग्निवीर एसएसआर। Bold steps, bright souls, brave heart, our next platoon, platoon number 7. Agniveer SSR. सिर्फ 16 हफ्तों की marching into the path of honor with pride is platoon number 70 led by Gajula Shrikant. To celebrate the day is platoon number 25, led by Sai Kumar Naidu, Navik GD. जोश और जुनून का सटीक उदाहरण प्लेटून संख्या 26 के कमांडर हैं जतिन मिश्रा अग्निवीर अहमद। Embodying discipline, dedication, and the spirit that ensure being musical is throughout.
fulfillment, personal growth, and an unwavering commitment to serve the Indian Navy and the Indian Coast Guard and the nation with pride and honor. धन्यवाद. सानुवर्णा. जय हिंद. जब हमारे बहादुर जवान अपने अंतिम कदमों के साथ सैन्य सेवा का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम उनकी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ निश्चय को सलाम करते हैं. उनकी यह यात्रा हमारे देश के लिए दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, इसका जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है. ଅବସର ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ. ଏମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଶାନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁକୁ ନିହାତ କରିପାରିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଡ୍ Ladies and gentlemen, may we have a huge round of applause for this wonderful parade display. ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ INS ଦିଲ୍ଲୀର ଯିଏ CEO ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି କମୋଡର ଦୀପକ ଲିକ୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ 4 ମାସ ରହିଛି, ସେ 4 ମାସର ଟ୍ରେନିଂକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି. 4 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ At INS Chilka, we take pride in training the raw. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ लड़कपन की उम्र से सैनिक बनने तक, SSR से अग्निवीर तक. The God is now showcasing the formation of Parivartan. The formation signifies the transformation of the raw recruits into able sea warriors in just 16 weeks of training. Ladies and gentlemen, request everyone to have a look at the मुकम्मल है इबादत, वतन शान रखता हूँ, वतन की शान की खातिर हथेली पर जान रखता हूँ. तुम देखते हो नशा मेरी आंखों में किसी और का. For your dedication and commitment towards the nation. Now they are showcasing the anchor formation with the help of 9 circles, which represents safety and security in marine context. The anchor helps seamen in maintaining safety and stability. नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है. The guard is now formed in sharp anchor formation. The formation signifies sharp and steadfast anchor between the Navy's core values of duty, honor, and courage. Now the guard is formed in the form of a ship's beam. The ship's beam on parade, it symbolizes effective control and direction displayed by the naval personnel at sea. It ensures safe navigation even unseen circumstances. passing out parade वहाँ देश आरंभ भक्तों के मुझे जो कौन
ପୂର୍ବତନ ନାଭାଲ ଅଫିସର ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଡ୍ ବାସ୍ତବରେ ଚିତାକଷ୍ଟ କରିକି ଜଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ତିର୍ତ୍ତୋଲ। Ladies and gentlemen, may we please have a huge round of applause for this marvelous parade display. Let's face risk without being deterred by fear. कोई पूछे कि हमने क्या सीखा, हमने अनुशासन सीखा, हमने कर्तव्य सीखा, हमने सम्मान सीखा। सम्मान एक स्वाभिमान है, ये सीखा। But precision means enduring strength. Now the guard is coming up to display INS Bakshi. INS Bakshi is the sixth and latest Corvette class number. INS Bakshi is guarding of India's sea, mastering the lead with unmatched skill. ट्रेनिंग आदि सफल होइछि आसंता काली विभिन्न कैंप रही Aircraft carrier, INS Vikrant. INS Vikrant is a proud symbol of India's maritime self-reliance. INS Vikrant was effectively deployed during the operation. दुर्गांक सह लोहित महापात्र न्यूज। The guard is now forming up in the shape of Indian Navy's core values of duty. ज्यादा थे, पर इन कांटों पर चढ़कर भी आसमां को हमने चीरा है, आसमां को हमने चीरा है। Ladies and gentlemen, a huge round of applause for our continuity drill guards. से कर जाएंगे, चाहे वो मुश्किल कितनी भी, हर बाधाओं से टकराएंगे। एक आवाज देकर तो देखो, तुम पास हमको पाओगे। लड़ना हो कहीं अंगारों से या जूझना हो तूफानों से, तुम हमको डटे पाओगे, तुम हमको डटे पाओगे। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, शीश सदा ऊंचा रखना इसका, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। लड़कपन की उम्र से सैनिक बनने तक, एसएसआर से अग्निवीर तक, पृथ्वी से ब्रह्मोस तक, अजय से नीलगिरी तक, दिल्ली से विक्रांत तक का काल जय सफर तय किया है। Ladies and gentlemen, a huge round of applause for our naval activities. आईएनएस चिल्का का ये भव्य दृश्य जो हर एक को मिट्टी से लोहा बनाता आया है, परिवर्तन का एक प्रदर्शनिक रूप